question is, will they sign off with a point? Will the defense say, Ankita wrong, Ankita wrong, but the move was right. The tackle was supreme. They win the point, and that might just be the closure of the game here. वेस्ट बंगाल ने तेलंगाना को 27-16 से हराया है। रेड पॉइंट में 5 से आगे, टैकल पॉइंट में 3 से आगे, एक बार ऑल आउट किया। शूटिंग पे हमारी नजरें हैं और हम बात कर रहे हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट की, जहां हरियाणा के अनमोल जैन और प्रिया राघव की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। 464.9 का उनका टोटल स्कोर रहा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, और ये जोड़ी अनमोल जैन और प्रिया राघव की पूरे मैच में इन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी थी। That was from the shooting range. We move on to the basketball courts where Rajasthan was in action, playing in white jerseys, were in some early pressure against Madhya Pradesh in blue and were down by quite a few points, 5 points in the first quarter, and even at half-time it was Madhya Pradesh in the lead by 3. But Rajasthan lived up to the legacy of Hanuman Singh and Nathu Singh, who have brought the nation laurels, and Rajasthan finally tied the scores at the end of 3 quarters, and in the end ended up winning by a whopping margin of 11. The final score 88-77 in favor of Rajasthan. So that's a great performance there for Rajasthan. Kho-Kho boys under 21 semi-final, Kerala beat UP Ravi and the score was 21-10. ये महाराष्ट्र का सामना गुजरात से, और महाराष्ट्र थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिख रहे थे रेड शर्ट्स में महाराष्ट्र, लेकिन अंत में अच्छी 4 पॉइंट की जीत हासिल की। 13-9 से आखिरकार महाराष्ट्र इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहे अपना सेमीफाइनल, और कल बॉयज अंडर 21 गोल्ड मेडल के लिए केरला का सामना होगा मेजबान महाराष्ट्र से। Tightly contested match was stretched to the 5th set with UP finally winning the match 25-21, 17-25, 24-26, 25-18, 19-17. जी हाँ, 5वां और आखिरी सेट भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जाकर जीता। जो वॉलीबॉल के वर्तमान रूल्स हैं उसमें 5वां और निर्णायक सेट 15 पॉइंट पे समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे लीड ऑफ 2 के लिए उत्तर प्रदेश को खासी मेहनत करनी पड़ी, और ये मुकाबला अंत में यूपी ने एक्स्ट्रा पॉइंट में जाकर जीता 5वें सेट में। UP will next play Punjab in their Pool B fixture. Serves well though, finishes out wide, और ये मुकाबला जीता Dev Javia ने। क्या शानदार कमबैक, and the winner was Dev Javia, and that's the final score for you. 6-4 the first set, Krish Patel, 6-2 the second, Dev Javia, pretty one-sided, and then it came down to the tiebreaker, and winning it comprehensively was Dev Javia. This is boxing. I'm Padamjeet Sharaf, with me Siddharth Pandey, and Mithika Gunele defeated Anu Rani 4-1 in boxing, 66 kilogram. Anu Rani from Haryana, Siddharth. Normally you expect a Haryana boxer to be coming heavy on, but Mithika proving her might. Yes, absolutely. Mithika Gunele taking that match, and much to the delight of the people in the arena. She will be delighted as well. Great start for Maharashtra. Arundhati in the next match, Arundhati Chaudhary defeated Kiranpreet Kaur. That's another upset, to be honest. Yeah, 5-0 in boxing, and you got 40 medals on offer in boxing, and that's where North India and Northeast can come into picture. 70 kilogram under 17 girls quarter-final was the encounter there. Arundhati proving her might big time. You know, interesting point system there always. Gone are the days when it used to be just power and skill. I mean, one of the important skills is how good can you defend. Tamil Nadu, Varsha. Well, 50-meter air rifle taking the gold. Look at that score, Padam. 447.1. Yeah, and in under 21 3 position, 50-meter air rifle there was. She was 4th in the qualification round, Siddharth, with a score of 1141. But in the finals, she was in stunning form to win the gold. Shirin Gondar of Haryana won silver with a score of 443.3, and Ayushi Podar of West Bengal bagged the bronze medal with a score 432.8. Darshana Rathore from Rajasthan, Maharani Gayatri Devi High School is where she comes from, won the gold in the skeet shooting under 21 girls. Great shooting by the girl from Rajasthan. Yeah,
victorious. Score 49. And now this just might be the last trade of this encounter. Yes, it will be. Will it be a 20-point win? Touches one more, 21. शगुन हो गया. शगुन हो गया. पैडी, आपने मेरे शब्द छीन लिए. उत्तर प्रदेश 49-28 से दिल्ली को हरा चुके हैं. 48-28, 48-28 यानी 20 पॉइंट के मार्जिन से यूपी ने दिल्ली को हराया है. सब कुछ झोंक रहे हैं जीत में और 1 पॉइंट मिलेगा. सौरभ तानाजी पाटिल ने आखिरी रेड में पॉइंट लिया और महाराष्ट्र को एक यादगार जीत दिला रहे हैं अपने पूल की नंबर 1 टीम के खिलाफ. जी हाँ, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो शुरू में गलतियां कुछ हुई वो महंगी पड़ी तमिलनाडु को.